friends, welcome back to our animation world. As in the previous video, we had learned and discussed numerals and number names up to 50. So today we will learn the ordering of numbers, what comes after, before and between. But before going further, I want to show you something. One day, grandfather and Madhav going to a bookstore. माधव वहाँ एक फ्लैश कार्ड का सेट देखता है जो कि एक स्टोरी बताती है। जब वो उसे उठाता है तो उससे कुछ फ्लैश कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं। तो उसमें से 2 कार्ड्स उठाता है और देखता है कि उसमें नंबर्स राइट हैं, एक पे 14 और एक पे 16। तब वो 14 और 16 के बीच का मिसिंग कार्ड फाइंड आउट करता है। जब उसे 14 और 16 के बिटवीन का 15 नंबर का फ्लैश कार्ड मिलता है तो वो उसे 14 और 16 के बीच में देता है। तब वो नंबर 17 का कार्ड उठाता है और उसे 16 नंबर के बाद रखता है और देखता है कि उसे 14 से 17 तक के कार्ड्स मिल चुके हैं। तब वो नेक्स्ट आफ्टर 17 फाइंड आउट करता है। फाइनली उसे नेक्स्ट 18 भी मिल जाता है। So he placed after 17. Mother saw one more card that was of number 13. तो उसने नंबर 13 कार्ड को 14 से पहले प्लेस कर दिया and finds a complete story. You know students, why did I decide this story? Because today we are going to study about ordering of numbers. What comes before, after and between. So let's get started. How to know what number comes after? A number that comes just after a given number is always one more than the number. Example story में माधव ने 16 नंबर कार्ड के जस्ट आफ्टर 17 नंबर का कार्ड पेश किया। तो यहाँ पर माधव को कैसे पता चला कि 17 नंबर का कार्ड 16 के जस्ट आफ्टर रखना है? Wait, I am add 16 plus 1 it will be 17. तो जब भी आप किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें उस नंबर की जस्ट आफ्टर वाला नंबर मिलता है और वो बिफोर वाले नंबर से 1 नंबर ग्रेटर होता है। सो 17 इज 1 more than 16। तो आपको पता चल गया ये नंबर 16 की जस्ट आफ्टर ही प्लेस है। अच्छा ये बताओ इस स्टोरी में माधव को ये कैसे पता चला 30 नंबर का कार्ड 40 नंबर के जस्ट बिफोर रखना है? लेट्स सी हाउ टू नो व्हाट नंबर कम्स बिफोर। A number that comes just before a given number is always 1 less than a number. Now subtract 1 from 14. It will be 13. जब भी हम किसी नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें उस नंबर को जस्ट बिफोर वाला नंबर मिलता है और वो आफ्टर वाले नंबर से 1 नंबर स्मॉलर मिलता है। So 13 is 1 less than 14. माधव को पता चल गया कि ये नंबर 14 से जस्ट बिफोर आएगा। अच्छा ये तो बता दिया कि माधव को कैसे पता चला कि 30 नंबर कार्ड कहाँ रखना है और 70 नंबर का कार्ड कहाँ। बट अब ये बताओ माधव को ये कैसे पता चला कि 15 नंबर का कार्ड 14 और 16 के बीच में रखना है? लेट्स सी हाउ टू नो व्हाट नंबर कम्स इन बिटवीन। A number that comes between two numbers is in their middle. It is 1 less than the number that comes after and 1 more than the number that comes before it. Example, card is number 15. Now subtract 1 from 16. We will get 15. And add 1 in 14. Again we get 15. Means कोई भी नंबर जब दो नंबर्स के बीच में होता है तब वो नंबर अपने जस्ट बिफोर वाले नंबर से 1 मोर होता है और जस्ट आफ्टर वाले नंबर से 1 लेस होता है। You can see 15 अपने जस्ट बिफोर वाले नंबर 14 से मोर और अपने जस्ट आफ्टर वाले नंबर से 1 लेस। Let's take some more examples to make you clear the concept of what number comes just after, before and between. Firstly, we will take off what number comes after. Look at the picture and tell me who is sitting after first boy or a girl? Yes, boy. तो फर्स्ट फ्रेंडली सीन का नंबर 22 है उसके जस्ट आफ्टर वाले का नंबर क्या होगा? लेट्स ऐड 1 in 22 we get 23. It means उसके आफ्टर वाले का नंबर 23 होगा।
Now we come at what number comes just before. This is a line of students. All students are standing roll number wise. अभी बताओ अगर इस गर्ल का रोल नंबर 32 है तो इसके जस्ट बिफोर वाले का रोल नंबर कितना होगा? Let's subtract 1 from 30. We get 31. It means इसके जस्ट बिफोर वाले का रोल नंबर 31 होगा. And last we come at what number comes in between. Aditya went to his friend's house. He doesn't know where his house is. And किसी से रास्ते में पूछता है उसके फैमिली का हाउस कौन सा है? तो वो मैन बोलता है आगे बोलता हाउस और पांडे हाउस के बीच में जो हाउस है वो उसके फैमिली का हाउस है. तो वो बोलता है कि आपको नंबर बता दीजिए. नंबर बोलते हैं 47. अभी बताओ अगर उसकी फैमिली के हाउस का नंबर 47 है तो उसके जस्ट बिफोर वाले हाउस का कौन सा नंबर होगा? Subtract 1 from 47. We get 46. It means उसकी जस्ट बिफोर वाले हाउस का नंबर 1 less than 47. That is 46 होगा. और 47 जस्ट after वाले हाउस का नंबर क्या होगा? And 1 in 47. We get 48. So it will be 48. Students, you can see 47 comes between 46 and 48. 47 से just before का नंबर 1 less है. 47 से और 47 के just after वाला नंबर 1 more than 47. I hope you may have understood this concept. If you still find any problem, ask your teacher without hesitation. I'm always there to help my students. Also, practice. The question is, complete the page number 48 and 49 here. Let's complete it again in the next video.